Hello students, welcome back to my channel Commerce Insights. We in the last lecture we have started chapter 2, and in chapter 2 we have already completed principles of scientific management, and also we completed the tech Henry Fayol principles of management, administrative principles of management of an industrial unit. This also we completed, and we also completed out of these 14 principles given by Henry Fayol, we completed 7. Okay, now we are going to start with the other 7 principles of management given by Henry Fayol. अब मैंने आपको तभी भी लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट वीडियो में, दैट 1 to 7 ये जो भी मैंने यहाँ पे सिर्फ मेंशन किए हैं विच आर द प्रिंसिपल्स, बिकॉज इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, एंड राइट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक यू कैन जस्ट लर्न. ओके, एंड वही नहीं, इनफैक्ट अगर आप इसको ओन वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करोगे तो भी चलेगा. ओके, और इसमें से देर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आई हैव केप्ट इट इन बोल्ड. मैंने बोल्ड करके रखा है फॉन्ट, ठीक है ना. तो फॉर्मेटिंग बोल्ड करके इसलिए रखा है बिकॉज दीज आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच विल कम फॉर 2 marks. जनरली दे आस्क फॉर 2 marks. ठीक है, तो उसमें सबसे पहला वी हैव कंप्लीटेड डिवीजन ऑफ वर्क, and then we also completed authority and responsibility. Then we completed discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration of personal. Now we will move on to the other 14 principles of management. Other 7, the last 7 principles of management given by Henry Fayol. उसमें सबसे पहला है सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हुआ दैट मैनेजमेंट आइदर कैन बी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज. ओके, दैट मीन्स ऑल द डिसीजंस, अगर छोटा यूनिट है, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट or depending upon the organization, there can be centralization and decentralization. That means all the decisions can be taken by just top management. ओके, और उसको नीचे के लेवल पे सिर्फ लोग जो है वो फॉलो कर रहे हैं, मतलब सारी अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड है. ओके, सारा डिसीजन पावर इज सेंट्रलाइज्ड. ओके, इट इज जस्ट इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन और वन ग्रुप ऑफ पीपल. दैट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन. ओके, एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब व्हाट यू डू इज आप अपनी थोड़ी बहुत अथॉरिटी जो है, डिसीजन पावर जो है वो नीचे के लेवल पे लोगों को डेलीगेट करते हो, देते हो. That is known as decentralization. Okay, this is also one of the principles. So Henry Fayol says that depending upon the organization. Now suppose अगर मेरा जो है एक छोटा सा यूनिट है wherein I have around 10 workers working and I am the one who is the owner of it. Okay, अगर मैं बहुत ही छोटा ऑर्गेनाइजेशन में मेरा छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट अ वेरी बिग यूनिट, तो अभी ये 10 लोग हैं सिर्फ और मैं हूँ, तो सभी डिसीजन जो है वो मैं खुद ले सकती हूँ. ठीक है, आई डोंट हैव टू नो, मेरा जो डिसीजन पावर है वो दूसरों को नीचे के लेवल पे कोई डेलीगेट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज देयर आर ओनली 10 एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर मी. सो आई कैन ऑल वेरी वेल small organization, not lot of decisions to be made. Okay, so I can take the decisions. I have the time also to concentrate on all the work of my business. So that's why it is centralized. Now imagine a big organization. See your school only. Okay, आपके स्कूल में you have a prep section, then you have a primary, then you have secondary, and then you have higher secondary. Then there are trustees. Okay, then there are principals, then there are trustees. तो ये बहुत सारे आप अगर आप स्कूल के एग्जाम्पल लो तो स्कूल में बहुत सारा, एक तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसमें बहुत सारे टीचर्स हैं और टीचर्स के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं. So if there is, suppose if there is a single principal for the whole school. Okay, now this principal, it is not possible for this principal to look into each and every detail of what is of prep section,
प्रेप सेक्शन में किसी को अगर छुट्टी चाहिए कोई टीचर को या कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम है सिलेबस से लेके, तो वो हर चीज को प्रिंसिपल के पास नहीं जा सकते, बिकॉज प्रिंसिपल विल नॉट हैव दैट मच टाइम। ओके, उसी तरह से प्राइमरी सेक्शन में देखो, सेकेंडरी में देखो, हायर सेकेंडरी में देखो, सो व्हाट हैपेंस, दिस प्रिंसिपल कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन all the aspects of all these sections. ओके, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट है कि एलसी देना है, किसी को लिविंग सर्टिफिकेट देना है, कोई बहुत बड़ा सीरियस इशू हो गया उसके लिए प्रिंसिपल को मिलना है, तो अलग बात है, बट अदरवाइज फॉर एवरी डे टू डे वर्किंग the principal cannot give that much time to each of these sections. So what does he do? He keeps certain coordinators, है ना, जो ये काम करते हैं, ओके, उनके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही किया व्हाट कोऑर्डिनेटर्स आर केप्ट, ओके, अपॉइंट किए जाते हैं। तो उनका क्या काम होता है, बस ये देखना कि जो उनका जो डिपार्टमेंट है वो ठीक से काम कर रहा है। So what the principal has done, he has given a part of his authority to the coordinators. So now these coordinators जो है उनको उतना तो supervisor बोलो या coordinator बोलो, they have the right to give leave to the teachers, they have the right to arrange, they are supposed to arrange the proxy, okay, syllabus देखना, एग्जाम कैसे कंडक्ट करनी है, क्वेश्चन पेपर लेना, ये सारी काम जो है all that work will be taken care by the by these coordinators, so that the principal can concentrate on some more important aspects of the school. So that is known as decentralization. So on one side you have centralization for small units and decentralization is for bigger unit. Decentralize करना मतलब आपके सारे जो भी आपका पावर है वो आपके पास ना रहकर आप वो पावर को नीचे के लेवल पे जो है वो डेलीगेट करते हो दूसरे लेवल पे। उसके बाद है स्केलर चेन। ओके, स्केलर चेन का मतलब ये हुआ कि देयर विल बी सम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, जैसे एक स्केल के टाइप का कैसा रहता है एक स्केल जैसा, ओके, वैसे ही देयर विल बी सम काइंड ऑफ यू कैन से सम लेवल्स। okay, there will be top level management, there will be middle level, there will be bottom level, then there will be employees. ओके, इससे क्या होगा कि जो काम है ना वो हर एक का काम डिफाइन होगा। टॉप लेवल भी विल डू देयर वर्क, दे विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर वर्क, देन मिडिल लेवल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर वर्क। ओके, मतलब हर जो टॉप लेवल है वो हर कोई काम नहीं करेगा, कुछ काम जो है वो मिडिल लेवल को देगा, मिडिल लेवल बॉटम लेवल को देंगे और देन बॉटम लेवल विल गिव इट टू द एम्प्लॉइज। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर कंप्लेन हो या कोई इश्यूज हो, देन द एम्प्लॉइज डोंट हैव टू डायरेक्टली गो टू द टॉप लेवल, दे कैन ऑलवेज गो टू द इमीडिएट ऑफिसर। और इमीडिएट ऑफिसर जो है वो अगर अपने तक सोल्यूशन ला सकता है तो ठीक है, अदरवाइज ही विल गो टू द मिडिल लेवल मैनेजर्स। अगर वहां पे सोल्यूशन आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज द मिडिल लेवल मैनेजर्स विल टेक द इशू टू द will take the issue to the top level managers. ठीक है, so that's what it means. Okay, so that is what is scalar chain. Order, there has to be some kind of in every organization there should be a systematic way of doing work. Discipline भी होना चाहिए और एक system develop करना चाहिए. There should be some systematic way of doing the work. So that's what is order. Okay, एक order में काम होना चाहिए ताकि आपका काम भी एक, इट शुड नॉट बी डिसऑर्गेनाइज्ड या इट शुड नॉट बी क्योटिक। ओके, तो काम कब क्योटिक नहीं होगा, जब आपने आज के दिन में ये करना है, इसका एक पॉइंट बनाया है। ओके, सो देयर इज सम काइंड ऑफ सिस्टमैटिज्म, सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग द वर्क, सो दैट इज व्हाट इज ऑर्डर। इक्वालिटी, ऑल द एम्प्लॉइज शुड बी इक्वल और शुड बी ट्रीटेड इक्वली irrespective of their caste, creed, gender, religion, ये सब देखे बिना that is the principle of management. Management says कि काम देखो, वर्कर्स का उनका कैलिबर देखो, उनका स्किल देखो, ना कि वो कौन से कास्ट को बिलोंग करते हैं, क्या लैंग्वेज बोलते हैं, कौन से जेंडर को बिलोंग करते हैं, ये सब नहीं देखना, उनकी काबिलियत देखनी। एंड ऑल द एम्प्लॉइज शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ओके, हर एक को अलग तरह से नहीं, देयर शुड नॉट बी अ पार्शियल और बायस बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजर्स। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर, पर्सनल मतलब एम्प्लॉय टेन्योर, ये लेबर टर्नओवर रेट से जो है पूरी तरह से
रिलेटेड है. I hope you know what is labor turnover rate. The rate at which people, laborers, the employees leave the organization. Okay, that rate should be less. That means ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके organization में काम कर रहे हैं for a longer time, छोड़ के नहीं जा रहे. ठीक है, तो ये अब तभी होगा. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल. इससे क्या होता है कि जो आपके ओल्ड एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो आपके तरफ ज्यादा सिंसियर होते हैं. दे आर मोर लॉयल ऑल्सो. ओके, और कोई भी नई चीज को अडेप्ट करने में उन्हें टाइम नहीं लगता है. दे डोंट टेक, दे आर इजी और दे आर रेडी टू अडेप्ट टू चेंजेस. ओके, उतना उनको प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वो वहाँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के एटमॉस्फेयर से तो एकदम ही वाकिफ है. दे नो व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एटमॉस्फेयर, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद द एटमॉस्फेयर दैट दे आर वर्किंग. उसी कॉन्ट्ररी अगर देखो, नए एम्प्लॉयज है, सबसे पहले तो उनको टाइम लगता है एडजस्ट होने में, फिर काम सीखने में. ओके, ऑल दिस थिंग टेक्स टाइम. सो employees, managers should always see to it that he keeps जो उसके employees है उनको you should keep them happy, you should keep them contented so that they don't leave the organization and they, okay, so that is what is stability of personal initiative. Okay, employees should be given an atmosphere wherein they will initiate, they will take a, they will act as a leader and take a step. ओके, काम करने में एक उत्साह, एंथुजियाज्म भी होगा, और वो कोई भी नया कुछ करने के लिए, कोई नई आइडिया देना या कोई आइडिया देना है तो उसके लिए वो हेजिटेट नहीं होंगे. ये तभी होगा जब मैनेजर्स ऐसे एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट करेंगे. ठीक है, ऐसा एटमॉस्फेयर जो है वो आपको क्रिएट करके देना है एम्प्लॉइज को, जहां से वो एम्प्लॉइज को कोई भी नया आइडिया, कोई भी नई स्ट्रेटेजी देते वक्त, सजेशन देते वक्त हेजिटेशन नहीं होना चाहिए. ओके, दे शुड ना आगे चढ़ के बोलना चाहिए कि हाँ सर हम ये करें तो, इस तरह से करें तो. ओके, तो ये तभी होगा जब मैनेजर्स उस तरह का एटमॉस्फेयर एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करें. लास्ट इज एस्पिरेट दी कॉप्स, दैट इज फीलिंग ऑफ वननेस. All the employees should have the feeling of oneness. That means the manager should try and see that the people in the organization, the employees in the organization have an affection with each other and they are working in unity with each other. Okay, unity is a very important part because अगर unity होगी, अगर employees को एक दूसरे के साथ काम करने में मजा आ रहा है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, तो फिर ज्यादा काम करेंगे, प्रोडक्टिव वर्क करेंगे और अच्छे से, और दूसरों का काम भी खुद कर लेंगे. ओके, सो दैट फीलिंग ऑफ वननेस शुड बी देयर. सो विद दिस वी कंप्लीटेड द 14 principles of management we have completed. Okay, now wait 1 minute, I'll just show you the textbook wherein these principles are there. हाँ, देखो ये कर लिया था सेंट्रलाइजेशन. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, there must be clarity that to which extent centralization and decentralization should be done to make successful management infrastructure. So that's what I was saying, ke powers can be delegated, given, okay, down the level depending upon the size of the units. So in giant units, size units, you require centralization and decentralization also. Then you have scalar chain. That means power and responsibility should not be kept at one level, it should be delegated down the level. उसके बाद ऑर्डर. ऑर्डर मतलब ईच, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑर्डर मतलब एवरी एम्प्लॉय शुड बी skilled employee should be at the right place. There should be proper systematic way of recruitment, a systematic way of doing the work. Okay, so that there is a, you can achieve the maximum. ठीक है, अगर ऑर्गेनाइज तरीके से काम करो तो. इक्वालिटी, दिस इज अबाउट इक्वालिटी अमंग एम्प्लॉइज. देन यू हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर.
then you have initiative, and then you have aspirate decoms. Okay, so with this we completed the 14 principles. Aspirate decoms बहुत important है. This is asked in board exams also. ठीक है. Now we will move on to our slide. We have completed the 14 principles of management. Now we will move on to the next stage. Okay, so 14 principles of management we completed. Now we will move on to the, I already told you that there are certain contributions done by various authors in the field of management जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं. Those who have given their own theory or principles of management. ठीक है, तो इसमें से पहला हमने पढ़ा साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय फेडरिक टेलर. Then we studied about Henry Fayol, who has given 14 principles of management. By the way, Frederick Taylor is known as the father of scientific management. Henry Fayol is known as the father of general management. And now we are going to study about Peter Drucker, who has also given his contribution in the field of management. Okay, and his contribution is known as MBO. Okay, that is management by objectives. ठीक है. Sorry student, I am having cold a little bit. Okay, so this is a contribution given by Peter Drucker in the field of management. अब ये कैसे आएगा सुन लो पहले. ये आएगा आपको 3 मार्क्स के लिए. 6 पॉइंट्स मैंने खुद ने बना दिए. अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो बड़ा सा पैराग्राफ दिए. ओके, हियर ओनली 6 पॉइंट्स आर ऑलरेडी गिवन. आपको ये 6 पॉइंट्स ही जो है वो लर्न करोगे तो मोर देन इनफ है. Now Peter Drucker is is a well-known managerial leader. Was also a famous writer, philosopher, and educator. He was in the favor of human asset. देखो पीटर ड्रकर है ना, उसने थोड़ा ह्यूमन को ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना, ह्यूमन को एज एन एसेट, तो ह्यूमन बीइंग को समझना, एम्प्लॉइज को समझना, इस बात पर ज्यादा जोर दिया है. So Peter Drucker gave more importance to human asset in the business unit. His main contribution was management by objectives and principles of self-regulation. ये short form पूछते हैं. What is the what is the full form of MBO? So they will ask. That is management by objectives. Now what does this management by objectives say? वो ये दो points इसमें explain हो गए. About management by objectives, he says that there should be uniformity in the aim of the employees and managers for the achievement of the aim. मतलब employees और managers के बीच में जो भी रिलेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि दोनों का फोकस एक ही हो, दोनों का गोल एक ही होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉइज सोच रहे कि नहीं भाई हमको कम काम करना है और ज़्यादा पैसे चाहिए, मैनेजर सोच रहे कि नहीं एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करवाना है. दिस शुड नॉट बी देयर. So there has to be a one uniform aim for both the employees as well as for the managers. His contribution lies in human resource management, marketing management and stress management. So he has given a lot of contributions in these 3 types of management. खास करके human resource management में दिया है because he has studied human psychology and he has kept employees in the center, okay, of the organization, and he feels that human are the most important asset in the business. And he is also known as the father of modern management. तो ये 3 तो आपको याद रहेंगे. Scientific management given by Frederick Taylor. He is known as the father of scientific management. Henry Fayol gave 14 principles of management. He is known as the father of general management. And Peter Drucker is he has given management by objectives, and he is called as the father of modern management. ठीक है, तो इससे ये अपना हो गया अभी management by objectives. Okay. Now the next 3 I will just explain you in another video. Okay, thank you for watching my video. Please like my video and please comment on my video whether you're liking. If you have any doubt and all, you can ask in the comment section. Thank you students.